Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Hope you are enjoying your days, warm days in this pandemic. Dear students, today we are going to touch the another poem of your textbook, The Hornbill, titled The Voice of Rain, written by Walt Whitman. Dear students, first of all, we should know something about the poet Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, an essayist, as well as a journalist. He is counted among the most influential poets in the English literature. Dear students, he is also called the father of free verse. Means the poet used less literary devices and rhyme schemes during his writing the poems. Born on 31st May 1819, West Hills, New York, USA, and died 26th March 1892, Camden, New Jersey, USA. Let me provide you a list of poems which was written by Walt Whitman, that are The Leaves of Grass, Song of Myself, Oh Captain, My Captain. Oh Captain, My Captain. Dear students, after this, let's discuss the title of the poem. Dear students, the title of the poem is written in personification. Now, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि personification आया कहाँ से? Why this title is written in personification? Beta, personification means when comparison is made between the human with the inhuman. Beta, The Voice of the Rain. Title, The Voice of the Rain. Voice जो है, that is humans, क्योंकि इंसान जो है उनकी आवाज को वॉइस कहते हैं और रेन की आवाज को साउंड कहते हैं. तो यहाँ पर ह्यूमंस की क्वालिटी, ह्यूमंस का कंपैरिजन किया गया है इन ह्यूमन के साथ, क्योंकि रेन जो है दैट इज नॉन लिविंग, वॉइस जो है वो ह्यूमंस के होते, ह्यूमंस आर लिविंग. हियर द पोएट मेड द कंपैरिजन बिटवीन द ह्यूमन विद द इनह्यूमन, दैट इज कॉल्ड द personification. Now another example of personification is like the flowers are dancing like the dancers, or the flowers are tossing their heads like the dancers. Dear students, the flowers are tossing their heads like the dancers, or the flowers are dancing like the dancers. Dancers, they are humans, they are living, they are humans, while as the flowers are non-living. तो यहाँ पर poet flowers के उस मस्ती को human की मस्ती के साथ, human beings के डांस के साथ कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो जिसको कहते हैं personification. This poem, The Voice of Rain, is written by Walt Whitman. This poem is a conversation between the poet and the rain. ये बातचीत हो रही है poet और rain के बीच में. तो what पोएट क्या करता है, उसको क्या लगता है जब वो बात करता है when he came in touch with the rain, when he encountered with the rain, तो उन दोनों के बीच में क्या बात होती है. एक imaginative description है between the poet and the rain. तो वो क्या फील करता है, वो रेन से क्वेश्चन पूछता है, रेन उसको रिप्लाई करती है. तो ये एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है, इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएट्स इनकाउंटर विद द रेन.
The rain explains the eternal journey in its birthplace, that is earth to the poet. یہ رین جو ہے وہ تفصیل سے بتاتی ہے پوئٹ کو کہ میرا جنم کہاں سے ہوا ہے اور میں واپس وہی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ارتھ فار دا پوئٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پوئٹ اور رین فال کے بیچ میں ایک کنورزیشن ہو رہی ہے جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے دا وائس آف دا رین. بیٹا لیٹس تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. جب ریور یا سی میں سن ریز پڑ جاتی ہے، ارتھ یا واٹر میں یا ریور یا سی میں، تو واٹر جو ہے، پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، زمین جو ہے وہ بھی گرم ہو جاتی ہے اور آٹومیٹیکلی جو پانی ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. تو واٹر ٹریول ٹورڈز دا واٹر، جو یہ واٹر ہے جب اس میں وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، تو یہ جب ہم گھر میں بھی پانی کو ابالتے ہیں تو اس میں واٹر ویپرز ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے جب زمین پہ یا سمندر میں یا ریور میں وہاں پر جب سن ریز پڑتی ہے تو زمین آٹومیٹیکلی گرم ہو جاتی ہے، تو وہ واٹر جو ہے، وہ پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، ایواپریٹ ہو جاتا ہے، واٹر ویپرز بن جاتے ہیں. پھر واٹر ویپرز بیٹا گیسز فارم میں چینج ہو جاتے ہیں. تو پھر جب تھوڑا سا یہ اوپر جاتے ہیں، یہ واٹر ویپر جو ہے یہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو کول ڈاؤن ہونے کے بعد یہ واٹر ویپر جو ہے آفٹر کول ڈاؤن دے چینجڈ دیئر فارم انٹو کلاؤڈس. پھر وہ جب اوپر جاتے آسمان میں تو مڈ وے میں وہ کلاؤڈز بن جاتے ہیں. کلاؤڈز جو گیسز فارم چینج انٹو لکوڈ، پھر کلاؤڈز بن کے پھر یہ گیسز فارم جو ہے یہ لکوڈ فارم میں چینج ہو جاتا ہے. پھر جو واٹر ڈراپلیٹ سے وہ فال ہو جاتے ہیں وہاں سے ان دا فارم آف رین، جس کو ہم کہتے ہیں پریسپیٹیشن. کیا کہتے ہیں؟ پریسپیٹیشن. ایک اور ٹرم ہے ٹرانسپوریشن. ٹرانسپوریشن مینز لینڈ جب وارم اپ ہو جاتی ہے بیکاز آف ایکسیسو ہیٹ. یہ جو ٹریز ہے، یہ جو روٹس ہوتے ہیں، یہ جو سوئل ہوتے ہیں، یہ واٹر جو ہے یہ ایواپریٹ ہو جاتی ہے ان کنٹینیوس فارم. دا جرنی آف ارتھ the journey of this rain starts from the earth. یہ جو بارش کی جو یہ جرنی ہے، یہ سفر جو ہے یہ زمین سے شروع ہوتا ہے اور واپس یہ زمین پر ہی آ جاتا ہے in the form of rain, in the form of showers, in the form of showers. جو رین کہتی ہے شاعر سے کہ میری برتھ پلیس ہے، that is the land, that is the land. اور اس پوئم میں بیٹا کچھ آرکک ورڈز استعمال ہوئے ہیں. آرکک مینز اولڈ فیشنڈ ورڈز جو اب obsolete ہو گئے ہیں، جو زیادہ تر یوز نہیں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بیٹا اینڈ who art thou. Now who art thou جو ہے یہ جو ہے اولڈ فیشنڈ ورڈز ہے، آرکک ورڈز ہے. ان کو مینز who are you. پہلے پرانے زمانے میں ہم یہی ورڈز استعمال، پوائٹ لوگ جو تھے یا انگلش میں یا کسی بھی لینگویج میں پہلے کچھ اور ورڈز استعمال کرتے. ناؤ ایوری تھنگ چینجڈ، everything change into a new form. تو پرانی رائٹنگ جو ہے وہ اب چینج ہو گئی ہے. فار ایگزامپل who are thou means who are you. یا ایک اور ورڈ ہے whence, WHANCE means where. تو اس پوائنٹ میں کچھ ایسے ورڈز بھی استعمال کیے گئے جن کو آرکک ورڈز بولتے ہیں یا obsolete ورڈز، جو یہ اولڈ فیشنل ورڈ جو آج کل obsolete ہو گئے ہیں، جو آج کل استعمال نہیں ہوتے ہیں. Dear students, and who art thou, said I to the soft falling shower, which straight to tell, give me an answer as dear as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal, I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descended to lay the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent,
unborn. And forever, by day and night, I give back life to my own origin, and make pure my beautify it for song, issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, record or unrecord, duly with love returns. Dear students, in this poem, the poet gives an imaginative description of his encounter with the rain. इस नज़म में शायर बारिश के साथ होने वाली अपनी इमेजिनेटिव ये जो डिस्क्रिप्शन है, इमेजिनेटिव ये तस्वराती मुलाकात की वजाहत करता है. The rain was falling in soft shower. According to the poet, the rain was falling in a soft shower. बहुत हल्की फवार पर बहुत हल्की बारिश गिर रही थी. और शायर क्या कहता है, वो पोएट जो है वो ही आस्क्ड द रेन ए क्वेश्चन, वो इस बारिश से एक सवाल पूछता है. क्या सवाल? हु आर यू, कि आप कौन हो, आप कौन हो, तुम कहाँ से आई हो. लेकिन बारिश जवाब देती है कि मैं इस जमीन की नज़म हूँ, मैं इस आई एम द पोएम ऑफ दिस लैंड. और वो कहती है फर्दर, poet asks the shower who he is. The shower replies in a very calm voice that I am the shower, I am the rain, I am shower, calls itself the poem of the earth. The poet says that it keeps rising forever out of the land and the bottomless sea. कि मेरा जो है, मेरी जो birth place है, the rain replies that my journey starts from the earth and returns back to the earth. That is called the birthplace of the rain. It rises unseen towards the heaven. वो कहती है कि मैं यहाँ से जमीन से अपना जन्म लेती हूँ और हेवन की तरफ, आसमान की तरफ जाती हूँ और फिर से वापस आ जाती हूँ वहां से. लेकिन यहाँ जमीन से आसमान तक जाते जाते इस जर्नी के दौरान, इस स्पेस के दौरान, वहां से वापस आने तक, वापस आते आते मेरी जो ये शक्ल, I changed my shape, but my essence remains the same. My essence remains the same. Then it comes down. फिर मैं वापस आ जाती हूँ, आसमान से मैं वापस आ जाती हूँ और हर एक चीज को मैं नहलाती हूँ, हर एक चीज पर मैं गिरती हूँ, हर एक चीज को मैं ब्यूटीफुल करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ. जमीन का हर जरा जो है उसको मैं गीला, उसको मैं अपने आप से, अपने वजूद से, अपने ये बारिश कहती है अपने वजूद से, अपने होने से हर एक चीज को मैं खूबसूरत करती हूँ, मैं हर एक चीज को नहलाती हूँ. और it gives back life to the earth which it is birthplace. वो फर्दर कहती है इस पोएम में बेटा कि अगर हम कुछ सीड्स बोएंगे, अगर हम कुछ सीड्स बोएंगे या कुछ प्लांट्स लगाएंगे, अगर मैं गिरूंगी नहीं, अगर मैं जमीन में, अगर मैं वापस नहीं आऊंगी अपनी इस जमीन पर, तो वो सीड्स जो है, वो जो दाने हैं, वो जो फल है जो हम बोते हैं, वो अनबॉर्न रह जाएगा, अनस्प्राउटेड रह जाएगा. बेटा अगर हम कोई भी बीज बोते हैं, सो करते हैं, अगर उसमें पानी नहीं पड़ेगा, अगर उसमें बारिश नहीं पड़ेगी, तो वो बीज जो है, वो दाने जो है, वो फल जो है वो उगता नहीं, या वो पेड़ पौधे हैं वो खुश्क हो जाते हैं, फिर सूख जाते हैं. या हम किचन गार्डन्स बनाते हैं, अगर उनमें हम पानी नहीं डालेंगे, अगर उनमें बारिश नहीं पड़ेगी, तो वो किचन गार्डन जो है, वो सब्जी के जो बड़े बड़े बाग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है. दे वुड हैव रिमेन्ड अनबॉर्न अनस्प्राउट. अगर आप बीज बोते हो, सीड सो करते, अगर मैं उन पर नहीं गिरोगे तो वो अनस्प्राउट, वो फट नहीं, उनमें कोई पैदावार ही नहीं होगी, वो अनस्प्राउटेड रहेंगे. The rain says that it purifies the earth and makes it beautiful over and over again. ये बारिश कहती है शायर से कि मैं जमीन के जरे जरे को खूबसूरत बनाती हूँ अपने वजूद से, और हर एक चीज को खूबसूरत बनाती हूँ अपने वजूद से. मेरे वजूद से हर एक चीज खूबसूरत हो जाती है. तो फिर पोएट जो है बेटा, वो इस नज़म को, इस पोएम को कंपेयर करते हैं गाने के साथ.
गाने नज़म के साथ कि ये जो गाना है, ये जो सॉन्ग है, वो पोइट के हार्ट से उभरता है, वो पोइट के डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द पोइटस, फ्रॉम द हार्ट ऑफ एनी पर्सन, वेदर इट इज पोइट और समथिंग एल्स, समवन एल्स. तो ये हार्ट जो है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द फीलिंग्स, फ्रॉम द फीलिंग्स. इसी तरह से ये जमीन जो है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न बैक in the earth. It does not matter to him whether anyone pays heed to it or not. Poet कहता है जैसे मुझे नहीं फर्क पड़ता है, शायर को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नज़म सुनकर या उसके बोल सुनकर कोई खुश हो जाए या ना, एप्रिसिएशन करे या ना करे, उसी तरह से इस रेन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. आफ्टर द पोएट हैज सung इट सॉन्ग, पे पोएट कहता है कि जब पोएट जो है अपना गाना गुनगुनाता है, चाहे कुछ खुश हो जाए, कोई खुश हो जाए या नहीं हो जाए, तो फिर ये वो लाइन है, वो धुन जो है, वो गाना जो है, वो फिर से पोएट के दिल में बस जाता है. उससे कोई इशू नहीं पड़ता कि कोई खुश हो जाए ना, कोई अप्रिसिएशन करे या नहीं. द सॉन्ग कीप्स राइजिंग अगेन अगेन फ्रॉम देयर एंड कीप्स द पोएट्स हार्ट प्योर एंड ब्यूटीफुल. बेटा किसी से वर्ड्सवर्थ जो है, उसने वर्ड्सवर्थ एक पोएट है, उससे किसी ने पूछा कि डिफाइन करो ये पोइट्री है क्या, पोइट्री है क्या. तो वर्ड्सवर्थ ने कहा पोइट्री जो है वो इंसान के दिल से जन्म लेती है. It takes its origin from the emotions recollected in tranquility. Recollected in tranquility. ये इंसान के जज्बात, इंसान के दिल से जन्म लेती है, और जब फिर इंसान खामोश हो जाता है, किसी पुरसुकून माहौल में आ जाता है, तो उसको फिर वो बाहर आ जाती है उसकी वो शायरी. तो ये जो थी and the summary, the introduction of the poem, the introduction of the poet. शुक्रिया.